Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Gyan Parwa. Today we are going to discuss about the basic law of probability and the law named as Additive Law of Probabilities. So in this law, the probabilities of the events are going to be added. The meaning of event, what is the probability, that all we have covered in the previous lecture. So those who are coming for this video for the first time, they must go to the first video जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. You have to go through that, then this lecture will be more understandable. Okay, so we are going to start with the additive law of probability, which is true for the events which are mutually exclusive event. So first of all, we must understand what is the meaning of mutually exclusive event. So event क्या होती है? That all we know, tossing of a coin, rolling of a dice. We have discussed in the previous video. Now, if events has to be exclusive, then these event has been defined and is to be defined the events in which occurrence of first prevents, you must pen down this, prevents the occurrence of other इवेंट. तो वो सारी इवेंट जिसमें किसी एक इवेंट का होना बाकी बची हुई इवेंट्स को प्रिवेंट करेंगी, देन दे आर नोन एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. लेट अस कंसीडर ए बॉक्स. वी आर कंसीडरिंग ए बॉक्स जिसके अंदर हम लोगों ने दो स्पेसिफिक एरिया चूज कर लिए हैं. दिस इज आवर एरिया ए एंड इट इज आवर एरिया बी. सो ए पार्टिकल हैज बीन एंटर्ड इन दिस बॉक्स एंड it is moving in the given box. So we are just going to observe the situation in which this particle to be found in A and in B. So with the basic understanding, let us say we are going to perform n trials. What is the meaning of trials? Means we are going to observe this particle for the presence in A or presence in B. How do we do this? Let us say we are going to observe this particle for 50 times. We are taking the observations 50 times. That simply means the value of n must be equals to 50. अब ये जो 50 ट्रायल किए गए जिसमें हम ये देख रहे थे कि ये पार्टिकल ए में है या फिर ये पार्टिकल बी में है, तो आउट ऑफ दीज 50 ट्रायल्स और आउट ऑफ दीज n ट्रायल्स, लेट अस कंसीडर दिस पार्टिकल फाउंड m1 टाइम्स इन एरिया A. If this particular particle is found to be in area A for m1 times, then how do we calculate the probability? Probability of finding the particle in the A, in the area A. अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? We have to use total number of trials. So how many trials are there? They are total number of trials, which are n. Or out of these n trials,
how many times this particle A is going to be found in A. This particle is going to be found in A. It is M1. M1 क्या है? It is the number. M1 जो है वो ये बता रहा है कि इन 50 ट्रायल्स में से कितनी बार ये पार्टिकल ए में ऑब्जर्व किया गया। अब हम दूसरी चीज डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन M2 टाइम्स द सेम पार्टिकल इज फाउंड इन एरिया बी। तो ये पार्टिकल बी में आउट ऑफ दीज n ट्रायल्स आर फाउंड M2 टाइम्स। दैट मीन्स इफ वी विश टू कैलकुलेट probability of this particle to be found in B, then how do we do this? It to be total number of trials, and how many times it is found in B? It is M2. So you must observe this situation. When the particle is in A, it prevents that this particle may not be or it should not be found in B. And if this particle is found in B, then it prevents that this particle must not be in A. That is why this is the case of mutually exclusive events. तो हम लोगों ने जो इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट कौन कौन सी हैं? पार्टिकल का ए में पाया जाना एंड दूसरा उसी पार्टिकल का बी में पाया जाना। जब पार्टिकल ए में होगा इट विल नॉट बी इन बी, दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स द पार्टिकल हैज नॉट टू बी इन बी। व्हेन इट इज प्रेजेंट इन बी इट प्रिवेंट्स दैट दिस पार्टिकल शुड नॉट बी इन ए। दैट इज व्हाई दे ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो इफ वी विश टू फाउंड the probability of finding this particle either in A or in B. Keep in mind, this particle has to be present in A and B. तो हम अब उस probability को निकालना चाहते हैं जिसमें ये particle either in A होगा और in B होगा। या तो ये particle A में होगा या फिर ये particle बी में होगा। तो अब हम उस प्रोबेबिलिटी को निकालना चाहते हैं जिसमें हमारा जो पार्टिकल है वो आइदर ए में होगा और ये हमारा पार्टिकल बी में होगा। इन दोनों में से किसी एक एरिया में ये पार्टिकल अवेलेबल होगा। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनका जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज गिवन बाय द एडिशन of the individual probability. How will it come? Let us have the situation. तो हम लोग अब क्या डिस्कस करना चाहते हैं? हम लोग probability कैलकुलेट करना चाहते हैं for that this particle either be in A or in B. तो अगर पार्टिकल, आपको ये ध्यान रखना होगा, अभी भी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? N. सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n। पर ये कितनी बार पार्टिकल ए में मिला होगा या फिर पार्टिकल बी में मिला होगा, ये सेम पार्टिकल। तो ये पार्टिकल लेट अस से फॉर 10 टाइम्स ए में मिला, इसका मतलब m1 की वैल्यू है 10 और ये पार्टिकल लेट अस से 20 टाइम्स मिला एरिया बी में। देन जो टोटल वेज हैं जिसमें पार्टिकल आइदर इन ए और इन बी, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? दिस पार्टिकल इज फाउंड आइदर इन ए और इन बी फॉर 30 टाइम्स। सो हाउ डू यू डू दैट? सो m1 is 10, I will write it as m1, and m2 is 20, we will write it as m2. So what is this uppercase? This is the total number of ways in which particle is either in A or in B. So if we do this,
we can rewrite this m1 upon n plus m2 upon n. We can simplify this. So what is this? m1 upon n, from this equation, it is the probability to be found in A. We are going to write it as PA. At the same time, m2 upon n is PB. So this is basically the small steps to get the probability of getting the particle either in A or in B. So this is simply, we have the relationship A या फिर B में पाने की probability. It could be written as summation of the probabilities of the individual one. Okay, so you must pen down this, and we are now going to proceed with an A. तो हमारे पास ये दिया गया है, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Means हमारे पास total cards जो हैं, they are 52 in numbers. These are the playing cards. Okay, out of this we have to calculate the probability in which जो एक कार्ड को ड्रॉ किया जाए वो आइदर अ किंग हो या फिर एक क्वीन हो. तो अगर आप लोग इस सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो गिवन 52 कार्ड में से आपको कितने कार्ड ड्रॉ करना है? वन कार्ड को ड्रॉ करना है. अब अगर वन कार्ड आपने ड्रॉ किया तो ये कार्ड वो पूछ रहा है कि इट आइदर ए किंग और ए क्वीन. सो इफ वन कार्ड इज बीइंग सेलेक्टेड, वो पूछ रहा है इट मे बी अ किंग और इट मे बी अ क्वीन. Okay, so all do we know that the number of kings available in these 52 cards, it is the 4. At the same time, the number of cards which are queen, they are also the 4. So अब हमें उस probability को कैलकुलेट करना है जिसमें जो ड्रॉन कार्ड है वो आइदर ए किंग हो और ए क्वीन हो. यहां पर क्या लगा रहे हैं? और. तो इट सिंपली मीन्स, अब आप देखिए, अगर आपने जो कार्ड को ड्रॉ किया है वो किंग हुआ तब ये क्वीन नहीं होगा. एंड इफ इट इज अ क्वीन देन इट शुड नॉट बी अ किंग because you have to draw only one card. So that is why these two are the exclusive events. These two are exclusive events in which if queen is there, king will not be there in the drawn card, and if there is a king, queen will not be there in a drawn card. So let us consider the probability to get a king जो कि कार्ड ड्रॉ किया गया है वो अगर किंग हो. सो हाउ मेनी टोटल वेज in which a card can be drawn? Forget about the king and queen. If you are having the 52 cards, then you can draw a single card in 52 ways. It may be a king, it may be a queen, it may be a 8, it may be a 9, it may be a 10. There are total number of 52 combinations, out of which one card can be drawn. So total number of ways are 52. But how many are the kings? The kings are in number 4. So the probability of a card which is to be a king, it is 4 by 52, and it is equals to 1 upon 13. In the same way, we could calculate the probability of the queen. It is again total number of ways in which a card can be drawn. It is 52, and out of this, how many queens are there? They are 4 in number. So it is 4, and the answer for this is 1 by 13. Because these are mutually exclusive events, so the probability to get either a king or a queen. So what do we have to calculate now?
probability of drawing a card which is either a king or a queen. It is to be written as probability of getting a king plus probability of getting a queen. So what is this probability of getting a king? It is 1 by 13. What is the probability of getting a queen? It is 1 by 13. The total answer must be 2 by 13. So this is the one example in which we have calculated the probability of the two mutually exclusive event. Okay, thank you very much. Have a nice day. Kindly subscribe my channel. Thank you very much once again.